Good afternoon, students. Now, in our previous class, I had mentioned about the Mahabharata, and particularly we are going to focus on on the literary sources. I had already mentioned about the Vedas and the Vedas and Brahmanas or Vedang, Vedanta, Aranakya, Upanishad, uh, Smritis, and other literary sources we have focused, and our entire history construction of ancient history or modern history is more or less dependent on the literary sources. And here I had already taught you the two epics you know very well, the Ramayana and the Mahabharata. Ramayana is older, composed and compiled by Valmiki. And Mahabharata, I have already mentioned that it was composed and compiled by Vedavyasa. Now, students, I am going to explain today the and after this, a few lights I will focus few points here. Then after we shall study about the finding out about the families during the Mahabharata period. The Mahabharata a critical editions. Now this project critical editions. It means the Mahabharata was now studied in a very broad or analytical or critical manner, very critical manner, because to reach at the any certain points and the fact, a historians must have to take the certain measures and the certain methods to find out the facts, and particularly the methods through which we get and reach at, that is the critical methods. It is the one of the effective methods to find out the facts in the history particularly. So here the Mahabharata has also been looked at very critically. In 1919, one of the scholar V.S. Sudhankar, and he is the one of the renowned Sanskritistics. Now he taken on this uh, strenuous job of the finding out about the Mahabharata and study of the Mahabharata. Now a team of the scholars now involved the finding out the Mahabharata. A team of scholars they involved in, and these teams of the scholars first they collected the Sanskrit text which were scattered and laid in remotest and nook and corner of our country. This task was taken on first. Sanskrit texts were collected, and after the collection of the Sanskrit works, a common they now next step they took, a common version was compared. Means the wherever the common version and the commonness they found, it was separated.
and generally from Kashmir to Nepal, and either the Tamil Nadu and the Tamil Nadu and the other southern deep southern area, the Sanskrit, which Sanskrit Mahabharata, which has been written in the manuscripts collected, and these manuscripts collected and which were different in the other scripts also, and they collected, and then after they sorted out, and particularly those uh, those verses and the version which were the very common to all. Then also, and then after, second, they also collected those version and those writings and scripts which differed from the Sanskrit version. Now the Mahabharata was written, and as well as they found these all the writings of Sanskrit all over the all over the India, and a common version they sorted out, and the rest of the Mahabharata, by the passage of the time, what the message of the Brahminical text and the Mahabharata and the writings at the local levels is differed. This differed local level. Those differences, what that they found the differences, common incidents and the events which were and the common versions were put together and the entailed together, and the other difference version were the also put together, and in this way the compilation of the critical editions now paced ran over from 13,000 pages. This was the retaining 13,000 pages. The Mahabharata was just a edition of Mahabharata was 13,000 pages, and this took a very long time. This was the 47 years almost. Now the time was consumed by these scholars, and during in this process, 47 years now this took the editions, and now whatever they composed this, the common versions they composed together, and others say which were the which others version and the differences were also entailed together, and also stipulated together as a appendices or the footnotes, and in this way, thus the 50% of this critical edition is guarded and is now covers 50% of the matter which and the stories which does not which are the different from the main story, differs. Understand? So now they just made the efforts. Second, next thing, after this compilation of the Mahabharata, they found the certain findings that these scholars and historians had found. First, first of all, they saw that now Sanskrit manuscripts are the similar to the all over. ये इन्होंने देखा कि जो संस्कृत जो राइटिंग्स हैं, जो संस्कृत है, ये सिमिलर है लगभग। संस्कृत जो कंटेंट्स हैं ये सिमिलर है। इसके बाद जो जैन, पाली एंड अदर लैंग्वेजेज जो टेक्स्ट थे, दे डिफर्स, एंड दोज टेक्स्ट डिफर्स,
and tells the different story. And this happened because a long transmission of the knowledge from top to the bottom transmitted. So during this Mahabharat version now change at the local level. लोकल लेवल पर जाते जाते महाभारत की जो स्टोरीज का है या उसका जो प्रेजेंटेशन है या उसके जो थीम्स हैं वो काफी चेंज्ड है और ये दिस नाउ speaks a lot about the complexities of the local cultures. लोकल कल्चर तक जाते जाते महाभारत नाउ एसिमिलेट्स हो गया महाभारत एसिमिलेटेड into the local languages or the and particularly जो पाली और प्रकृत प्रकृत और पाली और अदर टेक्स्ट जो लिखे गए अदर लैंग्वेज में तो दैट वेर द पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन द कॉमन मासेस जो संस्कृत टेक्स्ट इन्होंने फाइंडिंग्स में पाया गया कि संस्कृत language is the noble language and elite's language and it only confined to the elite class of our Indian society, the Brahmins class. So the Mahabharata, some historians say that Mahabharata was by the Brahmins for the Brahmins. It was written in that. And the other text जो लिखे गए other languages में जो लोकल लैंग्वेजेस में महाभारत की जो कंपोजिशंस किया गया ये दिस स्पीक्स ए लॉट अबाउट द कॉमन मैन्स वर्जन्स तो यहाँ महाभारत रिटन हियर तो हम एक एनालिसिस अगर करें इफ यू एनालाइज द महाभारत तो हम क्या देखते हैं व्हाट वी फाइंड हियर तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अगर लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट से तो ये डोमिनेटेड बाय संस्कृत लैंग्वेज का डोमिनेशन है इसमें सेकेंड एक कांस्टेंट एक डायलॉग्स फॉर्म होता है डायलॉग बिटवीन द ग्रेट ट्रेडिशन एंड एज वेल and the resilient traditions means the local flexible traditions which now the turn the story in the different ways and one Sanskrit language made and maintained its constancy and its similarities all over the India but at the local level this now happened changed so this critical editions now reveals a constant dialogue between the great traditions and the little tradition. And it was also observed by the study of Mahabharata that the rules and practices were followed and tried to be the followed all were in our country. It was the followed and it was accepted. But somewhere at the local level, it was sometimes questioned and sometimes rejected, even rejected. These great scholars had to analyze to what specific views the Mahabharata was written, for whom it was written, and who is writing, in which language it is being written. They analyzed to come at the truth and the point. They analyzed all the incidents and the writings. They observed or analyzed, compared very critically. Or in this way, they found that, but some scholars also just criticize that this or particularly
महाभारत के बारे में वी नो वेरी वेल कि दिस हैज बीन द now divided, dominated in Sanskrit language, and we also see that it is analyzed well, criticized well, critical form views was taken on, or last ultimately they found out that कि महाभारत incidents had happened, understand, or it is the most of the characters of the Mahabharata as true. These incidents happened, but even then, some scholars don't accept these incidents of the Mahabharata. They say that the practices which had been found in the Mahabharata literature, the social practices which were practiced, but whether this battle happened, this is not corroborated. This had not been supported by the other evidences. इसको दूसरे एविडेंस से सपोर्ट नहीं मिलता है महाभारत, तो उन्होंने इस चीज को दे हैड नाउ स्टडीड और एनालाइज दिस. सेकेंडली we see here some of the learned secondly the Mahabharata next this was the stage we see that Mahabharata was written and this was the critical edition, how this is the critical editions and what was the its finding. So here we can see that to being as a student of history, you must have to go very carefully, analyze the different sources to uh, reach at the facts, and second, understand the perspectives and ideas authors arriving at the any conclusion. जैसे कि अगर कोई ऑथर है उसको एक एनी कंक्लूजन पर अगर पहुंचना है, रीच आउट होना है, तो वो पूरी तरह से एनालाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, डिफरेंट सोर्सेस से उसकी कंपेयर करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल जो ओल्ड टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर्स हैं, ये बहुत ही लैंग्वेज इनके डिफिकल्ट हैं, इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद उसमें कई चीज़ें चेंजेस हैं कि कई लोगों ने उसमें एडिशन से ऐड किया है, तो वी हैव टू बी द कंसिडर्ड दीज. और दूसरी बात कि इतिहास में कोई भी लिटरेचर लिखा जाता है तो हमें देखना है कि प्रीजुडिसेस, यानी कि द पर्सन हु इज द राइटिंग whether he is influenced. प्रिजुडिस उसको कहते हैं कि राइटर इन्फ्लुएंस बाय राइटिंग सर्टेनली इन द वे और द अदर. कोई भी राइटर्स लिखता है लिटरेचर को उसने कंपाइल किया, तो हमें ये बहुत इतिहासकार एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री वी हैव टू ऑब्जर्व दैट कि वी इन्फ्लुएंस्ड है, कोई भी व्यक्ति सराउंडिंग्स, किंग्स, administration, conditions, his own ideas and the own views, language, everything. Now he is influenced by. So to create and analyze any critical text, तो we have to be the see that कि the writer जो है वो prejudiced है कि नहीं, यानी कि objectivity, और it is the very difficult to achieve the objectivity. ये बहुत डिफिकल्ट टर्म्स है या टास्क है ऑब्जेक्टिविटी को जीतना. तो महाभारत, सेकेंड थिंग, हिस्टोरियंस मस्ट हैव टू बी केयरफुली, अगर आप राइटर हैं, इतिहास लिखने जा रहे हैं, एनालाइज करना चाहिए, एनालिटिकल स्टडी करनी चाहिए, और ए सर्टेन द पॉसिबल डेट ऑफ द कंपोजिशन, यानी डेट क्या है, कब कंपाइल किया गया, ये बहुत कॉन्शियसली हमें स्टडी करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए एक रिसर्च के रूप में कि डेट कब का है, उस डेट से अगर अदर डेट्स को हमें कॉन्फर्मिटी है कि नहीं,
अदर जो फैक्ट्स उससे उससे अबाउट दैट इंसिडेंट्स अगर कहते हैं तो दोनों में एक कॉन्फॉर्मिटी और रिजेम्बलेंस है कि नहीं, ये देखना है एक इतिहासकार का या एक हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के नाते। इन्फ्लुएंस, हिस्टोरियंस मस्ट हैव टू केयरफुल एनालिसिस सर्टेन डेट है, हमें देखना है कंपोजिशन, कंपिलेशन ऑफ टेक्स्ट, प्लेस ऑफ इट्स कंपोजिशन, कहाँ पे वो कंपोजिशन किया गया है, वहाँ की सराउंडिंग्स क्या है, वातावरण सराउंडिंग्स क्या है, किस सर्कमस्टांसेस में उसको क्रिएट किया गया, किसने कराया, वेदर द एग्जैगरेशन है कि नहीं उसमें, हमें देखना है कि क्या उसमें एग्जैगरेट करके लिखा गया समथिंग, क्या उसमें फैक्ट से, हाउ फार दिस इज द, और राइटर्स जो है क्या कोट पोएट है, आप देखते हैं अगर कोटियर्स क्या करते हैं, व्हाट दे डू, जितने भी कोटियर्स हैं कोट राइटर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जैगरेट करके लिखा, हाइपरबोलिक वे में लिखा, किंग्स की पावर कुछ है, उसके उसके एक्सपेंशन इतना छोटा है, उससे पूरा विश्व का, पूरे वर्ल्ड का किंग्स। तो ये क्या है, ये हाइपरबोलिक और ये एग्जैगरेशन है, इसी को हमें देखना है एक इतिहास के स्टूडेंट्स आपको होने के, कि वेदर द एनी टेक्स्ट इज रिटेन, तो हमें केयरफुली हैंडल्स करना है एवरी टेक्स्ट को टू फाइंड आउट एट द फैक्ट। एक डेट की और उसके बाद प्लेस है, बिफोर अराइविंग कंक्लूजन हिस्टोरियंस हैज टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड द नाउ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल हिस्ट्री। अगर हम सोशल हिस्ट्री लिखते हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो हमें इसमें बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा, वी हैव टू बी द, और हमें इस पर ध्यान माइंड करना पड़ेगा। सेकंड, लैंग्वेज और सब्जेक्ट मैटर, नाउ ये लैंग्वेज क्या है उसका, सब्जेक्ट मैटर क्या है, और कंटेंट्स महाभारत क्लासिफाइड, और जैसे कि महाभारत को की कंटेंट्स को हम देखते हैं, क्लासिफाइड किया गया है 2 सेक्शन में इसको जनरली, एक नैरेटिव्स और दूसरा डिडैक्टिक। तो नैरेटिव्स में क्या है, स्टोरीज, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव, लेकिन महाभारत और डिडैक्टिक क्या है कि दिस इज द फिलोसॉफिकल्स एंड सोशल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, इसमें प्रिस्क्रिप्शंस दिया गया है, एक मैसेज दिया गया है, सोशल प्रिस्क्रिप्शन, इट्स हाउ द सोसाइटी विल बी द सेट राइट एंड कीप अप द राइट, दिस प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, और ये प्रिस्क्रिप्शंस किस फॉर्म में दिया गया, दिस इज द दिस प्रिस्क्रिप्शन वाज गिवन अवे एंड डिलीवर्ड बाय द कृष्ण। आप जानते हैं कि कृष्णा played a very important role, he was a Yadava's king and played the very important role and sided with the Pandav and tried to balance the battle, इन्होंने कोशिश किया, तो ये प्रिस्क्रिप्शंस वो देते हैं, एंड ही वाज द सपोज टू बी द फॉर्म ऑफ द विष्णु, एक और ये स्टे Vishnu, he was the form of the Vishnu, understand, other form of the Vishnu, Krishna. So he was the divinely revered, और इनके जो डिलीवर जो स्पीच किया इन्होंने महाभारत में अर्जुन को जो इन्होंने लेसन्स दिया, वो डिवाइन लेसन्स थे, दैट इज द नोन, और ये डिवाइन लेसन्स डिडैक्टिक कहा जाता है, और दिस इज द नोन एज द भगवत गीता, अंडरस्टैंड, और भगवत गीता में ये कंपाइल्ड है के फॉर्म में, और जो कि एक गाइडिंग और प्रिस्क्रिप्टिव एक गाइडिंग लाइन्स हम कह सकते हैं हमारे पूरी सोसाइटी के। आज भी गीता की जो नॉलेज है, जो प्रिस्क्रिप्शंस दिया है श्री कृष्ण ने, इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, देयर इज नो alternative of the Gita. Whosoever had gone through the Gita, he knows all the key of the Christians. Everything, know the key. And narrative say we see that social message. Historians opine that subject matter is the very dramatic and most important didactic section जो मैंने कहा,
he advised the अर्जुन कि what the अर्जुन had to do, अर्जुन को क्या करना है, उन्होंने उन्हें मैसेज दिया। और संस्कृत ट्रेडिशंस डिस्क्राइब एज इतिहास, लेकिन कुछ सम हिस्ट्रियंस से इसे, इस घटना को या ये इंसिडेंट्स जो हुआ इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा महाभारत बैटल हुआ नहीं हुआ, वी डोंट फाइंड इट्स कोलैबोरेटिव फैक्ट्स टू प्रूव द दिस बैटल। महाभारत हुआ मानते चले गए लोग, लेकिन कोई कोरोबेटिव प्रूफ्स नहीं मिलता है इसमें कि जिसको कि हम अल्टीमेटली इसको एक्सेप्ट किया जाए, कोई इसे प्रूव करने का। लेकिन आज खैर तो महाभारत का हुआ। नेक्स्ट हम चले, वी शुड कंसंट्रेट ऑन किनशिप, फाइंडिंग आउट द अबाउट द फैमिलीज। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सोशल स्ट्रक्चर। हम एक्चुअली हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर कहता है जो, एंड वो सोशल स्ट्रक्चर या सोशल सेटअप इज स्टिल going on and still it is the functioning in society by more or less we find in this structure. And now here we are first of all finding out the family structure कैसा होता है एंशिएंट पीरियड में। फैमिली स्ट्रक्चर तो हम फैमिली का जब फॉर्मेशन तो ऋग्वेद से भी हम लोग जानते हैं, ऋग्वेद है और अदर जो सब्सिडरीज हैं और जो स्क्रिप्चर्स हैं उससे थ्रू मिलता है हमें। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ हमारे हिंदू सोसाइटीज का, दैट हैपेंड ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड, एंड स्टिल दोज थिंग्स स्टिल वी फाइंड टुडे, आज भी दोज प्रिस्क्रिप्शंस आर फाइंड। तो वी फाइंड वेरिएशन इन फैमिली। पहले परिवार को लिया जाए कि किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग दैट टाइम, और here what kind of the structure. First we find variations in families in terms of number. Families, we find the many kinds of the family. Generally we find a number of joint family. This was in ancient period, and still we see in the rural area we can find the joint family still. But this chain of joint family is breaking down after the advent of the British India. That is the breaking down because of the industrialization, because of the urbanization. This chain is breaking down. But during those ancient time, our society, our family was joint family, and the many members lived together in the family. Their relationship with each others was defined. परिवार में फादर पोजीशंस, मदर पोजीशंस, चिल्ड्रंस पोजीशंस, ब्रदर्स, sisters, all positions was well defined and well their relationship. Second, now activities shared by them, all activities which happened in family was shared by all. आज भी आप देखते हैं कि anything to be done in the family, all children, father, mother, all share together. So like this, in those times, the all the activities which happen in परिवार में, family में, whatever, all family just members now participated together, and all members shared food together. Today we all share food together. There was a collective food sharing shared, and all the resources also. Whatever the family had the resources, those resources were shared, and the shared participated and live, and they all live together under a one roof and worked together, all family members. And a ritual, whatever the rituals and the functions and the festivals, they celebrated together. And now in technical terms, relations can be the term kinfolk. It was just a blood relations. It was a larger network of the family. Kinfolk means the family break होते होते
न्यू फैमिली कंपोज होते हुए क्या होता है, ये लार्जर फॉर्म्स में एक्सपैंड होता जाता है। ओके, तो फैमिली, वन फैमिली से फ्रॉम वन फैमिली ओरिजिन से सेकंड फैमिली बनता है, थर्ड, लाइक दैट। तो ये जो एक्सपेंशन होता है वन फैमिली से डिफरेंट फैमिलीज एंड द रिलेटिव्स, दे हैड द ब्लड रिलेशंस टुगेदर। एक नेटवर्क, फैमिली नेटवर्क अगर एक्सपैंड होता है, काफी बड़ा होता है, तो किनफोल्क्स में चेंज होता है। तो ये दिस इज द किनफोल्क्स। एंड नाउ फैमिली टाइज, और ये टाइज कैसा था, नेचुरल, क्वाइट नेचुरल, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, ये नेचुरल बॉन्ड था। और और मोर ओवर क्या था, ये ब्लड बॉन्ड था। तो ब्लड बॉन्ड क्वाइट नेचुरल बॉन्ड होता है, जो ब्लड का रिलेशंस है ये नेचुरल बॉन्ड होता है। एंड मोर ओवर वी सी दैट ये नेचुरल बॉन्ड और फैमिली ties now nature and the bloods. Familial ties defined in many different ways in the different societies. इस ties को हर सोसाइटी टू सोसाइटी ये डिफरेंटली इसे डिफाइन किया गया। और कजिन रिगार्डेड एज द ब्लड रिलेटिव्स, जैसे फॉर इंस्टांसेस अगर देखा जाए तो कजिन जो होता है वो ब्लड रिलेशंस में आता है कहीं कहीं। नाउ वेयर वन अदर डोंट नाउ रिगार्ड सो, लेकिन दूसरी सोसाइटीज में अदर्स से डोंट रिगार्ड सो। किसी परिवार में, किसी सोसाइटीज में कजिन को ब्लड रिलेशन में माना जाता है, अदर जगह नो। दैट इज द डिफरेंट सिस्टम एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, सेकेंड थिंग इज दैट ideal ideals of patrilineal. I am going to explain here ideals of patrilineal. Ideals of patrilineal. And one term also I am going to write here, matrilineal. Matrilineal. Patrilineal, matrilineal. Okay, now when you writes, when after the demise of the father, the elder brother gets the authority and entitled, becomes the entitled to get the assets, authorities from the father, just descended from the father. So this condition is called as the ideals of patrilineal, where the once gets, daughter gets, and from the mother's authority, mother is authority, mother holds the authority in family, an asset. So then that down to the gets down to the daughters, and daughters dominates in the family. So this is called as the matrilineal. So now in northern India, particularly, there was since our society was the patriarchal society. There are two kind of a society. One, patriarchal society. Second, matriarchal society. So in patriarchal society, now father dominates in the family, और matrilineal society में mothers becomes the more dominant in the society. So let's say here we are going, the father, now joint family system was prevalent in that. During that I have already mentioned that a joint family, all members lived in the same house and had the and shared the same kitchen. They now lived under the same roof and the same kitchen. And families, now the families of Aryans was the patriarchal family. मैंने कहा कि जो आर्यंस थे उनकी फैमिली पैट्रियल्स था, यानी मीन से फादर डोमिनेटेड, he held the entire power and exercised the entire power over the all members of the family. He held the rights of the property, all the assets. First,
The father, the head of the family, took all the decisions regarding the family, regarding the any kind of the issues. Second, that head of the family was called the Grihapati. He was known as the Grihapati. He was called as the Grihapati. Second now, the responsibility for maintaining the now security of the family and the performs yajna. Entire security of the family depends upon the father. Now, कुलपति या गृहपति कहा जाता था या कुलपति भी कहते थे उसको. कुल यानी फैमिली मेंबर्स का वो हेड होता था, उसका सुपीरियर होता था, इसलिए पति मीन्स द सुपीरियर एंड ओवरराइडर्स. अंडरस्टैंड. तो ये गृहपति या कुलपति कहा जाता था, फादर जो हेड होता था. सेकेंडली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंटायर सिक्योरिटी, प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द होल फैमिली मेंबर्स and as well as perform the yajna. Yajna was performed. So now he now participated as a head in the yajna and whole properties की पूरी properties से का owner गृहपति होता. यानी कुलपति was the property held under his hands. Second, exercise full control over his family or in the matters of the related to it. Entire issues and the matters he now exercised his power. He took all the decisions over the any issues related to the any members, and moreover all his family members obeyed command. Naturally all members of the family obeyed and now obeyed his order. No members of the family dare to define him. Rigbed, maybe in the Rigbed, we have the instances that a father, a son had became defiant of his father's orders. What happened? Father now made him blinded. So harsh instances we find or the actions taken by the father. Even in the Rig Veda, we have the instances there. Second thing is that here they obeyed the command. Patriarch's family birth of son was desired. Now what about the now when the son was desired? Vedic periods में भी आप देखेंगे, we can see that son was preferred and he was son was prayed for. Son, लेकिन even then, but the birth of daughters was not a matter of the sorrow. ये ऐसा matter of the sorrow नहीं था, लेकिन son, a sound son, a good son was desired. And उसके लिए क्या करते थे? सन के लिए वो पूजा करते थे, वर्शिप करते थे लड़के के लिए कि लड़का हो. पहले प्रिफर्ड है, सन वाज प्रिफर्ड. जैसे आज भी हमारे कंजर्वेटिव सोसाइटी में वी कैन सी this kind of the attitudes or the intention in the conservative family. Son is preferred, daughter is always neglected, deprived of the all kind of the her rights. So here we see that peoples now prayed for gods for son. Son inherited the property all over the resources of the father. At the case of the father's death, then all resources now came in the hands of the son. Son now held all the resources after the demise of the father, according to the theory of the patrilineal. लेकिन here the matrilineal case में क्या था कि father now just a mother, the right of the mothers say after the demise of mothers, the high position of the mother's authority now passed to the daughters. This was the matrilineal. So in particularly in the Aryan society we find और ये matrilineal system हम अनार्य society में पाते हैं. Southern India
It was the denoted, this area was represented the Anario culture. तो वहां पे मैट्रिलिनी प्रिवेलेंट था, लेकिन सम टाइम्स अगर हम देखें, आगे हम पढ़ाएंगे आपको पैट्रिलिनी पर हम फोकस करेंगे, तो आप समझिए कि किस तरह का परिवार, हु डोमिनेटेड इन द फैमिली, हाउ द फैमिली लिव टुगेदर, एंड द सन वाज प्रिफर्ड, son birth was the preferred. Okay, so here we are just today students, so far I am going to just stop our uh, stop the lectures. Next day we shall a certain focus I will give on the patrilineal or the matrilineal, and more further study will continue. Thank you very much for attending the class. Okay.